Mr. Zusto, Sachin Miller, this is from ISM Institute of Stock Market. So today is 6th May. So let us see what the market has planned for us. So if we see the daily chart, so in daily chart, if we draw some lines and lines, so where the supports are there. So clearly there was a support at particular level. There was a clear support at this particular level. कल market एकदम support पे ही close हुई थी. But आज seeing the SGX Nifty, I can hope कि ये support break हो जाएगा and we can see market coming at this particular level. This is the next area of support. So in daily chart, clear there is a downtrend, downward journey. So if Nifty doesn't hold this support, doesn't hold this 16,700 का support, तो definitely we can see a sharp downside up to 15,900 से 15,875. But yes, there would be a relief rallies, there would be some upsticks, sharp upsticks. So in the daily chart, clearly the trend is downward. If it doesn't hold 16,600, because मैंने अपने previous videos में भी बोला है कि 16,600 एक short term के लिए एक base है. तो अगर आज closing on the closing basis 16,600 से नीचे हम close होते हैं तो gates open हो जाते हैं 15,800 और 850 के. तो we hope कि market manages to close above 16,600, which is very unlikely. Now let us see weekly. अगर वीकली में देखें हम तो वीकली में यू कैन सी द सपोर्ट्स एट. अगर थोड़ा सा हम ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो वेयर वी कैन पुट सम ट्रेंड लाइन. तो अगर एक सपोर्ट देखें तो एक छोटा सा एक सपोर्ट 16,400, 450, 16, 350, 400 के करीब है. यहाँ से एक बाउंस दिख सकता है एंड अगर यहाँ से कुछ बाइंग रिलीफ बाइंग आती है तो वी कैन सी सम अपस्टिक्स. अदरवाइज द गेट्स आर ओपन फॉर 15,800. तो प्लीज बी लाइट इन द मार्केट. डोंट ट्रेड टू मच. डोंट ट्रेड विदाउट hedge. Trade options, trade futures clearly with hedging. One more thing I want to tell you is if we put some indicator like RSI indicator में एक interesting चीज़ है. अभी भी we are not in the oversold zone. If you see RSI indicator में we are not into the oversold zone. So oversold में आने के लिए अभी टाइम लगेगा एंड तभी हम लोग बाइंग का सोच सकते हैं क्योंकि अभी भी RSI indicator is at 44 in the weekly chart. So we can see much downside and we can see around 24, 23 तब जाके हम बाइंग का एक सोच सकते हैं. डेली चार्ट में भी RSI is not in oversold zone, so it will take around 500, 300, 500 points to make RSI in the oversold zone. So from the RSI indicator also we are seeing the downside in the market. We can see in the intraday we can touch these सपोर्ट्स 16,400 का तो आज शायद ओपनिंग पे ही हम टच कर जाएं और आने वाले दिनों में इंट्राडे में हम शायद 15,900 भी एक बार के लिए टच कर जाएं. ओके, तो प्लीज बी लाइट इन द मार्केट. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.